नमस्कार, मैं प्रेरणा मसाला एंड तड़का में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? हाउ यू एंड योर फैमिली इज़ डूइंग? आई एम श्योर इट्स अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस एंड दिस शैल टू पास। ओके, सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलिशियस रेसिपी जो बनाने में भी आसान और खाने में भी स्वादिष्ट। वन एज ओल्ड रेसिपी विच इज़ लव्ड बाय वन एंड ऑल। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये रेसिपी। आप आसानी से अपने घर में कभी भी बना सकते हैं, कम सामान में एक स्वादिष्ट रेसिपी। इट्स अ वेजिटेरियन डिश, अ वेजिटेरियन डिलाइट, loved by everyone. So today's special dish is paneer makhni. We are going to cook paneer makhni today. So you'll be very surprised to know paneer makhni was found way back in 1950s. It was, it's a combination of tomato gravy with a buttery flavor. This was for the first time prepared in the kitchen of मोती महल। जब आप ये ग्रेवी बनाते हैं तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टमाटर को बॉईल किया है। जो मैंने टमाटर को बॉईल किया है इससे एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट आपको मिलता है। The texture comes out really well. And I have added a spoon of tomato puree to it. The idea was to get a nice color. Tomato puree gives a very beautiful color to this recipe. इस रेसिपी में मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप कैश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इट गिव्स अ नाइस अ वेरी क्रीमी फ्लेवर टू इट। एंड ऑल्सो यू विल नोटिस वन थिंग दैट आई हैव एडेड ऑयल first and then I added butter to it. The idea was the butter shouldn't get burned. If you add butter to it at first, the flavor you get a burnt flavor in it. Butter tends to melt too fast and get burnt too easily. So that's the reason I added oil to it. तो चलिए देरी किस बात की है, झटपट से बनाते हैं ये मज़ेदार स्वादिष्ट रेसिपी जो बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल। आई एम श्योर यू मस्ट बी मिसिंग योर रेस्टोरेंट फूड एट होम राइट नाउ इन दिस लॉकडाउन. So you can easily enjoy our recipe. I'm sure everybody is going to love it. Okay, so now if you're watching our recipe, if you like the content, don't forget to subscribe to our channel. Press the like button and ring the bell icon so that you keep getting updates on our recent recipes. Do drop us a comment so that we can get better with our recipes. Tell us what you like. We'll come up with new recipes. A word of encouragement that will keep us motivated and we can do better. Do not hesitate to ask us any question. You can always write in comment section and we'll surely come back to you. तो चलिए जब ये सारी बातें हो गई तो why wasting so much time? Let's head to kitchen.